नहीं बेटा स्टार्ट कर ले चलिए नेक्स्ट वन इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्मल properties of matter. फर्स्ट वन देखो बेटा थर्मामीटर device which is used to measure the temperature is called as of your thermometer, isn't it? इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा मान के चलिए if x is the property which is varying linearly then temperature is being given by the formula if x is the property which varies linearly then temperature is given by the formula T is equals to x at T degrees centigrade minus x at 0 degrees Celsius divided by x at your 100 minus x at your 0 into your 100 degrees Celsius into your 100 degrees Celsius is called as of your temperature. X can be anything beta. X can be the length, X can be the temperature, X can be the pressure, X can be the volume, X can be the resistance. Isn't it? कुछ भी हो सकता है. So X can be anything here right now. So I can write here. Here property X may be length of mercury. It may be the resistance of metal, comma. It may be the pressure, comma, volume, etc. Anything it can. क्या अगर प्रेशर होगा तो Pt माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई पी 100 लिख लेंगे. अगर टेम्पर वॉल्यूम होगा तो Vt माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई पी 100 माइनस वी नॉट लिख लेंगे. रेसिस्टेंस होगा तो Rt माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर 100 माइनस ऑफ योर आर नॉट लिख लेंगे. क्लियर बेटा. नेक्स्ट वन टेम्परेचर स्केल्स. टेम्परेचर स्केल्स P by 5 is equals to F minus 32 divided by 9 is equals to K minus 273.15 divided by 5. Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. Okay, Celsius scale, Fahrenheit scale and as well as your Kelvin scale. So relation between Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale is C by 5 is equals to your F minus 32 divided by 9 or C by 5 is equals to K minus 273.15 divided by your 5. Okay, इसके अंदर देख लीजिए बेटा one division of Celsius scale will be equal to 1.8 divisions of your Fahrenheit scale or that will be equal to your one division of your Kelvin scale. ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे. Next. Triple point of water. Triple point of water is 273.16 Kelvin at 4 mm of mercury. 4 mm of mercury. Next one is absolute temperature. Absolute temperature.
T is equals to triple point का temperature multiplied with your P divided by pressure at your triple point. Done, madam? Next one is radiation pyrometer. Radiation pyrometer. Instrument which is used to measure very high temperatures are called as of what beta pyrometers. It is based on Stephen's law. It is based on Stephen's law. Based on Stephen's law. Temperature T is equals to E divided by sigma to the power of 1 by 4 Kelvin. Next one is expansion of solids. Expansion of solids. इसमें बेटा तो फॉर्मूले आपको याद रखने के फर्स्ट वन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. Coefficient of linear expansion associated with one dimension bodies like alpha. Alpha is equals to change in length divided by original length into change in temperature. Then the same way coefficient of superficial expansion, or we say this one as of your areal expansion associated with your two-dimension bodies. Associated with your two dimensions body, and given by beta. Beta is equals to change in area divided by original area into temperature difference. Then coefficient of third one is coefficient of volume expansion associated with three-dimension bodies. That is gamma is equals to change in volume divided by original volume into temperature difference. Okay, इन सभी का रिलेशन आपको याद होना चाहिए था. Beta is equals to 2 times of your alpha and gamma is equals to 3 times of your alpha. ठीक है ना? Beta is 2 times of your alpha और gamma is equals to 3 times of your alpha. And alpha is to beta is to gamma will be equal to 1 is to 2 is to 3. Done? Next one. Sir, you are not audible. Sir, you are not audible.
First one देखो बेटा, thermal properties of matter में. First one is about your thermometer. If X is the property which varies linearly, then temperature is given by the formula T is equals to your xt minus x naught divided by x100 minus x naught into 100. इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, T is equals to your some temperature that is nothing but of your xt minus of your lower fixed point divided by ये हो गया upper fixed point minus lower fixed point. Like Celsius scale के लिए lower fixed point will be equal to your 0 degree Celsius and upper fixed point will be equal to how much better? 100 degree Celsius scale. So here the property X can be what better? The property X may be the length of the mercury column, it may be the resistance of your material, it may be the pressure or it may be the volume. ठीक है ना? अगर प्रेशर में लिखते हैं तो एग्जांपल देख लीजिए, T can be written as of your PT minus of your pressure at 0 degree Celsius divided by pressure at 100 degree Celsius minus P naught into your 100, isn't it? अगर वॉल्यूम में लिखते हैं V is equals to VT minus V naught divided by V100 minus V naught into 100. अगर रेसिस्टेंस में लिखते हैं तो T is equals to resistance at T degree Celsius minus resistance at 0 degree Celsius divided by resistance at 100 degree Celsius minus resistance at 0 degree Celsius multiplied with your 100. ठीक है ना? चलिए, टेम्परेचर स्केल्स बेटा, वी आर हैविंग 3 टेम्परेचर स्केल्स व्हिच आर कॉमनली यूज्ड बेटा. रूमर भी यूज करते हैं लेकिन वेरी कॉमनली विल बी यूजिंग द सेल्सियस, फॉरेनहीट एंड केल्विन. Relation between them is C by 5 is equals to your F minus 32 divided by 9 is equals to K minus 273.15 divided by your 5. It was regular equation. I hope everyone might have been remembered this one. One division of the Celsius scale will be equal to 1.8 division of Fahrenheit scale, and that will be equal to 1 division of your Kelvin scale. Like say Fahrenheit scale के लिए this will be 32, this will be 212. Kelvin scale के लिए this will be 273.15 and this will be 373.15. This is for your Kelvin scale. This one is for your Fahrenheit scale. Celsius scale के लिए this will be 0. This will be equal to 100. This is your Celsius scale. 3 scales. ठीक है ना? चलो. Now triple point of the water is how much better? 273.16 Kelvin at 4 mm of mercury. Theoretical question है, याद रख लीजिए सीधा. Then absolute temperature T is equals to your triple point temperature multiplied with your pressure divided by your PT. Then radiation pyrometer, an instrument which is used to measure very high temperature, is called as pyrometer, and it is based upon your Stephen's law. Or formula है T is equals to your E divided by sigma to the power of 1 by 4. Done बेटा? So expansion of solids, very famous equation, first one. Coefficient of linear expansion given by the alpha. Alpha is equals to change in temperature by change in length divided by original length divided by temperature difference. Unit will be equal to how much better? This will be degree centigrade inverse, or it may be your Kelvin inverse. इसके लिए भी इतना ही होगा. The temperature unit will be equal to degree centigrade inverse, or it will be equal to your Kelvin inverse. Beta is equals to change in area divided by your original area. Beta is equals to your change in area divided by original area multiplied by your change in temperature. Coefficient of volume expansion associated with 3-dimensional bodies. Gamma is equals to change in volume by original volume into your temperature difference. ठीक है ना? इसका भी यूनिट सेम आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, और इट मे बी योर केल्विन इनवर्स. अल्फा बीटा गामा का रिलेशन क्या है बेटा? 1:2:3. Then density of the material at any temperature. Density of the material at any temperature is given by the formula rho T is equals to rho naught into 1 plus gamma into T. अगर rho 1 and rho 2 in terms of 2 temperatures है बेटा, T1 and as well as of your T2, then I can say that coefficient of this volume expansion, coefficient of volume expansion, formula याद होगा आप लोग. This is given by the formula gamma is equals to rho 1 minus rho 2 divided by this one is rho 2 into temperature difference T2 minus of your T1. Very important formula. कभी-कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछा जाता है इसके अंदर. rho 1 minus rho 2 divided by rho 2 into your T2 minus of your T1. Done.
Next one is expansion of liquids. Expansion of liquids. Liquids has two expansion beta. One is apparent expansion and another one is of your real expansion. तो अगर हम लोग कभी भी लिक्विड को हम लोग मेजर कर रहे हैं बेटा या हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, मान के चलो ये वेसल है, isn't it? इसमें लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक, isn't it? जैसे हम लोग लिक्विड को भरे and it been heating it, what is happening? First the level of the liquid, मान के चलो यहाँ पर ये था, तो first the level of the liquid will come to the P and then finally it will go to the C. लेकिन अपने को दिखता directly from A to C, isn't it? Vessel solid रहने की वजह से when you are heating it, तो पहले vessel expand होगा, उसकी वजह से level of water will come from A to B, isn't it? A to B. But we'll be seeing the expansion only from your A to C. A to C is your apparent expansion, the false expansion what we are seeing, isn't it? Is that clear? A to B is the expansion of vessel. This is the expansion of your vessel. Real expansion will be from your B to C, but B to C will be the real expansion. This will be your apparent expansion. A to C will be apparent expansion, which is a naked eye can be seen. But actually what is happening is level of water will go from A to B first. Then from B, there will be an expansion to the C. So real expansion will be equal to apparent expansion plus of your expansion of your glass. So I can say that if gamma A and gamma G are the apparent coefficient of expansion of liquid and volume coefficient of expansion of container. Then I can say that real expansion will be equal to gamma real will be equal to gamma apparent plus gamma of your glass. ठीक है ना? Gamma of glass will be equal to how much beta? 3 times of alpha of glass. And the coefficient of real expansion is also equal to gamma apparent plus 3 times of alpha of your glass. So real expansion is gamma A plus of your gamma G. Clear बेटा? इसके अंदर देखो बेटा फर्स्ट फॉर्मूला जो याद रखना है अपने को, गामा ए कैसे लिखते हैं बेसिकली फर्स्ट पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ योर apparent expansion gamma A will be equal to volume at T degree Celsius minus volume at your 0 degree Celsius divided by V naught into your T. Done बेटा? Is that clear? अगर वॉल्यूम ना दे के मास भी दे ना तो मास भी लिख सकते हैं, mass at your T degree centigrade minus mass at 0 degree Celsius divided by mass at 0 degree Celsius into your temperature T. Done better? Next one is expansion of gases. Expansion of gases. Expansion of the gases में अपने को we need to remember the expansion due to the pressure, keeping the pressure constant and volume constant. जब हम डिस्कशन करते हैं, gamma of your V will be equal to 1 by 273 per degree Celsius. Coefficient of your volume expansion, keeping the pressure constant. Or gamma of your P, keeping the volume constant, it will be equal to same for me 1 by 273 per degree Celsius. इसके डेरिवेशन है बेटा, बट अभी राइट नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड. डायरेक्टली आप इसको अल्फा बीटा से भी लिख सकते हैं. गामा ऑफ V will be equal to 273 per degree Celsius and gamma of P will be equal to 1 by 273 per degree Celsius. गामा ऑफ V मतलब कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट. अगर हम लोग ने गैस को एक्सपैंड किया तो फाइनली अपने को ये पता चला कि गामा कोएफिशिएंट ऑफ V और वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 1 by 273 per degree Celsius.
The same way, if I'm keeping the volume of the gas constant, I'm increasing the pressure. So gamma of the P will be equal to 1 by 273 per degree Celsius. For every gas, gamma of V will be equal to gamma of your P, and that value will be equal to 1 by 273 per degree Celsius. Done. Sure. Now, this is something very important. Correct formula. Fractional change. Fractional change in moment of inertia of the rod. Moment of inertia of the rod due to small change in temperature. Due to a small change in temperature, that is nothing but delta T. So I is equals to formula क्या बेटा m into your r square होता है. Very small changes के लिए I can write this one as delta I divided by your I is equals to 2 into alpha into your delta T. Then बेटा क्योंकि ये mass constant हो जाएगा, this will be delta I divided by I, errors में लिख रहा हूँ 2 into delta R divided by R. डेल्टा आर मतलब क्या बेटा डेल्टा एल बाई योर एल विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्क अल्फा इनटू डेल्टा थीटा. तो वही लिखा है ना मैंने यहाँ पर. सो डेल्टा आई बाई आई विल बी इक्वल टू 2 इनटू अल्फा इनटू डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा is right now for me what? Temperature difference. Alpha is the coefficient of linear expansion. Alpha is your coefficient of your linear expansion and delta T is your temperature difference. This one is your temperature difference, isn't it? For rotating rods के लिए अगर लिख रहा हूँ मैं, for rotating rods, I can write delta omega divided by omega will be equal to minus of delta I by your I. That will be equal to minus of 2 alpha into your delta T. Change in angular velocity divided by angular velocity is equals to minus of 2 alpha into your delta T. Clear, beta? Some shortcuts to solve the numericals. ये तो by heart आपको याद रखना है. अब derive करते बैठने का अपने पास टाइम नहीं है बेटा. First one देख लीजिए. If two rods are connected in series, then equivalent coefficient of linear expansion. Then coefficient of linear expansion. जैसे मान के चलो यहाँ पर से एक रॉड है जिसका लेंथ L1 है and this one is made up of alpha 1. Another rod of length L2 and made of alpha 2. Both of them are added. इसका effective जो आएगा ना, so alpha will be equal to your L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 divided by, this will be equal to your L1 plus of your L2. Alpha is equals to your L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 divided by L1 plus of your L2. Clear, beta? The change in time period. The change in time period. The change in time period of a pendulum. Change in time period of your pendulum. Formula याद है अपने को? Delta T by your T will be equal to your half into alpha into your temperature. So whatever time you are taking right now, that is nothing but equal to your temperature difference, यानी delta theta. Done, beta? Delta T by T will be equal to your half into alpha into your delta T. Next. Bimetallic strip. Bimetallic strip. The word itself indicates a combination of two different metals. When they have been heated, it will bend in the shape of an arc like this.
नहीं, तो इसका एक कॉमन रेडियस आ जाएगा, इसका थिकनेस t, इसका थिकनेस t, ये हो गया इसका कॉमन रेडियस r. So radius of the bimetallic strip is r is equals to thickness of this given plate divided by alpha 2 minus alpha 1. जिसका ज्यादा होगा that one is the first one बेटा, alpha 2 divided by alpha 1 into your delta t. Clear? So radius of your bimetallic strip is given by the formula r is equals to thickness divided by alpha 2 minus alpha 1 into your delta t. Clear बेटा? See this question बेटा, मान के चलो अपने पास एक मेटालिक प्लेट है ऐसा, और यहाँ पर ऐसे दो शेप्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस मान के चलिए ये है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान के चलिए b है, और ये हो गया c. When you heat this metallic plate, isn't it? A will increase, the distance between A and C will also increase, C will also increase. Photographic expansion. There will be expansion in all of the three in the outward direction. C भी outward direction increase करेगा, B also increases outward, and A also increases in the outward. Clear बेटा? दोनों का थिकनेस t लिया है बेटा मैंने. What is b? b कहाँ पर है बेटा? b is the distance between this rectangular plate and c बेटा, circular plate. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जब इस प्लेट को इंक्रीज करोगे ना तो एरिया ये विल बी इंक्रीज, इसका लेंथ ये इंक्रीज होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस b also increases and c also increases. Sir, B will decrease no, sir. b will not decrease, वही तो कंडीशन है ना, क्योंकि मेटालिक प्लेट देयर विल बी एक्सपेंशन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो प्लेट जब एक्सपैंड करे जाएगा सो दिस विल कम लाइक दिस. सो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपैंड होगा, दिस आल्सो एक्सपैंड्स इन आउटवर्ड. मेटालिक प्लेट का एक्सपेंशन जो होगा ना इट विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन. अपने को ऐसे दिखाई देगा ये एक्सपैंड होगा तो ये एक्सपैंड होगा तो p की वैल्यू डिक्रीज होगी, नो, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी एटम्स है ना जो सॉलिड से बना हुआ है, दैट इज आल्सो एक्सपैंडिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. देन Yes, sir. ये अल्फा 2 है बेटा, दिस वन इज अल्फा 1. जिसका अल्फा ज्यादा होगा दैट विल बेंड इन द डायरेक्शन, और जिसका कम होगा द बेंडिंग ऑफ दैट वन विल बी स्मॉलर. देन चलो ऑलमोस्ट स्टार मार्क डाल के देख लीजिए बेटा. अपन ने लॉस और गेन का जो फॉर्मूला लिखा था, द लॉस और गेन इन टाइम पीरियड, the loss or gain in the time period of pendulum clock, of the pendulum clock. What is the formula we are written beta? Delta t divided by t लिखे थे ना, that means temperature, at initial temperature मान के चलो theta naught अगर अपना initial temperature है, and theta is your final temperature heat करने के बाद, ठीक है ना. So I can write here theta naught divided by your theta, that is nothing but t at your 0 degree Celsius हम लोग ले रहे हैं, theta at your 0 degree Celsius. This one is theta at your some temperature t. So
मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेल्टा टी बाई योर टी, मतलब टेम्परेचर एट योर थीटा फाइनल divided by temperature at your initial minus 1 will be equal to your half into alpha into delta theta. ठीक है ना? That means in a given time interval, in a given time interval t, in a given time interval t, अगर अपना theta value is greater than theta naught, yani final temperature is greater than initial temperature, then in that case there will be the loss of time. There will be the loss of time, that is equals to half into alpha into delta theta. If theta is lesser than theta naught, yani final temperature is lesser than initial temperature, then we say that there is gain of your time. There is gain of your time. So that is given by the formula half into alpha into delta theta. Done. Sure. And one more very important term इसके अंदर thermal force. Thermal force. याद है फॉर्मूला आप लोग को? मान के चलिए एक रॉड है and it is been fixed between two rigid walls like this. और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं and you are heating it. If there is no expansion linearly, the rod will slightly bend like this. This bending of the rod is known as of your thermal expansion. Okay, is it clear? I'm writing the formula directly for this one. Derive करते बैठेंगे तो नहीं होगा. So force will be equal to F is equals to YA alpha into delta theta. Force by area क्या होता है बेटा? Thermal stress. Force by area is equals to Y into alpha into delta theta. That means thermal stress का formula. Thermal stress is equals to Y into alpha into delta T. What is Y, beta? Can anyone tell me what is the Y? Young's modulus of the material. Yeah, So Y is your Young's modulus. Alpha is your coefficient of linear expansion. Coefficient of your linear expansion. Delta T is your temperature difference. Delta T is your temperature difference. Clear? Metal scale. देखिए बेटा, if a scale gives correct reading, एक metallic scale है बेटा, which gives a correct reading at a temperature, मान के चलो theta naught, then at a temperature theta, जब temperature बढ़ रहा है theta, scale क्या हो सकता है बेटा? Scale will either expand कर जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर कि जो थीटा है ना हायर है या लोअर है. हायर होगा तो एक्सपैंड कर जाएगा, अगर थीटा लेसर है तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. सो एट दैट टाइम एंड हेंस जो स्केल रीडिंग होगी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी. सो स्केल रीडिंग विल बी एदर लेसर और ग्रेटर. जब एक्सपैंड होगा तो लेसर होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ग्रेटर होगा. देन योर ट्रू वैल्यू. तो जब निकालने का तरीका देखो बेटा, ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू जो स्केल की रीडिंग होगी ना, दैट वैल्यू यू नीड टू राइट हियर राइट नाउ. ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू स्केल रीडिंग इनटू 1 plus alpha into theta minus theta naught. So that will give me the answer. Very important beta. True value is equals to your scale reading into 1 plus alpha into your temperature difference, so theta minus of your theta naught. That same. Alpha of copper is greater than alpha of your iron beta.
यानी अगर एक बाइमेटालिक स्ट्रिप आपका एक कॉपर से बना हुआ है और आयरन से बना हुआ है, सो देयर इज मोर एक्सपेंशन इन कॉपर, सो जिसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा दैट विल टेक द अपर शेप एंड जिसका कम होगा दैट विल टेक द लोअर शेप। यानी इसके अंदर ये अपर पार्ट हो जाएगा अल्फा ऑफ योर कॉपर और ये नीचे वाला हो जाएगा अल्फा ऑफ योर आयरन। क्लियर? The true value will be equal to your scale reading into 1 plus alpha into theta minus of your theta. Done? बाकी के थोड़े एप्लीकेशंस मैंने आपको शेयर कर दिया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड सी द रिलेशन फॉर दैट वन बेटा। फाउंडेशन में थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने जो यहाँ पर लिखे नहीं है, मैंने आप लोग ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, सो प्लीज गो थ्रू दैट वन वंस। So in case of hollow sphere and solid sphere, which one will expand more when heating with the same temperature? ये मैंने क्लास में भी 1 से 2 बार करवाया था बेटा, जब टेम्परेचर सेम होगा, लार्जर द थिकनेस दैट विल बी एक्सपैंडिंग मोर। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल में करवा दूंगा बेसिकली। सी दिस क्वेश्चन बेटा एवरीवन, सी दिस वन, we got a clock, say for example a clock while keeps correct time at 30 degrees Celsius, 30 degrees Celsius, has a pendulum rod made of brass, made of your brass. The question is the number of seconds it gains or loses per second, कितना हो per second when temperature falls to 10 degrees Celsius is. Alpha of brass is given as 18 into 10 to the power of -6 per degree Celsius. चलो ट्राई करिए सभी लोग। A clock while keeps the correct time at 30 degrees Celsius has a pendulum which is made up of your brass. The number of seconds it gains or loses per second when the temperature falls to 10 degrees Celsius. And a final temperature is lesser than of your initial temperature. So obviously it will be losing. Okay. Temperature of the correct one is how much for me beta? 30 degrees Celsius. Isn't it? Yes, And the sir. number of seconds it gains or loses. We have got a formula for that one. Delta T will be equal to half into alpha into delta T into your capital T.
isn't it? अल्फा वैल्यू दे रखा है अपने को प्रॉब्लम में, सो दैट इज इक्वल्स टू योर हाफ इनटू, अभी बताइए गेन होगा कि लॉस होगा? ऑब्वियसली इट विल बी गेनिंग, सो इट इज योर हाफ इनटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 18 इनटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इनटू टेंपरेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा बता, 30 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 20 इनटू पर सेकंड बोला है 1 सेकंड, isn't it? So it is half into 18 into 10 power minus 6 into 20 into 1 second. So चले जाएगा 2 ones. This one is nothing but 2 tenths. So this will be equal to how much for me? 18 into 10 to the power of minus 5 seconds. So it will be gaining this much amount of your time. Clear? Sir, इतना how calculation तो आपको gaining? करना ही जरूरी है. सर इनिशियल टेम्परेचर बड़ा है ना तो गेन Initial temperature 30 degrees Celsius. Isn't it? I told you your Yes. gain and loss will depend upon what right now for me? Gain कब होगा? अगर final temperature is lesser than initial temperature. यस Theta is your initial and this one is right now. This is the final temperature is lesser than initial temperature. Then only it will gain of the time. Okay, sir. Okay. Isn't Sir, it? theta naught is initial temperature. हाँ, theta naught is initial temperature. बेटे यहाँ पर देखो लिखा है ना, theta naught is the initial temperature. Theta is your final temperature. Okay, sir. ठीक है ना? Yes, sir. चलो. See this question better. Try to do it. The density of a substance, the density of a substance at 0 degrees Celsius is 10 gram per cc, यानी cubic centimeter, and at 100 degrees Celsius, its density is 9.7 gram per cc. So the coefficient of linear expansion of substance, linear expansion of your substance is, so try again. The density of a substance at 0 degrees Celsius is 10 gram per cc. यानी density at 0 degrees Celsius is 10 gram per cc, and at 100 degrees centigrade यानी final that will be equal to 9.7 gram per cc. 0 डिग्री सेल्सियस के पास 10 है, 100 डिग्री सेल्सियस के पास कितनी है 9.7, और ये पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है. तो वी नो द फॉर्मूला, रो एट योर फाइनल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू रो एट इनिशियल टेम्परेचर इनटू 1 माइनस गामा इनटू डेल्टा थीटा. ये कहां से आया बेटा, किसी को याद है? यहाँ देखो डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा था, Yes, sir. यहाँ पर कहाँ गया है डेंसिटी का फॉर्मूला, हाँ ये वाला. अगर ये वाला टर्म मैं ऊपर ले लो, डेंसिटी एट T डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 प्लस गामा इनटू T टू द पावर ऑफ -1. तो बायनॉमियल एक्सपेंशन का रूल लगा रहा हूं, तो दिस विल बी रो नॉट इनटू 1 माइनस गामा इनटू T. अगर रो T इज नथिंग बट एट योर फाइनल टेम्परेचर and rho naught is at your initial temperature. Initial temperature मान के चलो या at 0 degree Celsius मान के चलो. So this will be the formula. Rho at T will be equal to rho naught into 1 minus of your gamma into your T. ये formula लगा रहा हूँ यहाँ पर. So I got the conditions here right now. You see. सर रो 1 माइनस रो 2 बाय रो देखिए. 2 माइनस T1 नहीं ले सकते. Rho at final कितना है 9.7. That is equals to 10 into 1 minus gamma into temperature difference कितना हो जाएगा बेटा 100. Yes, sir. Isn't it? Sir, हाँ. sir, we can use that formula also, no, sir. Rho 1 minus rho 2 by rho 2 into T2 minus T1. Rho 1 minus rho 2 is equals to. Sir, gamma is equals to rho 1 minus rho 2 by rho 2 into T2 minus T1. हाँ. Sir, वो वाला भी formula use कर सकते ना, sir? हाँ कर सकते हैं, देखो लेकिन easier भी will be more comparable with this one only ना. एक बार देख लो, एक बार कैलकुलेशन किसका ज्यादा इजी है अपने, Okay, sir. Okay. उसके हिसाब से भी आ जाएगा अपने. अब ये वैल्यू कितनी आ रही बताइए. How much I'm getting from this one? Explain how it gains. इसमें आ गया ना गेन और लॉस का. Yes, sir. चलिए ये कितना आ रहा बताइए.
से कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है? This will come out for me. कितना आ रहा है बेटा? Three into 10 power minus. ये 100 गामा हो जाएगा. This one is 100 times of gamma. That will be equal to 0.03. तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3 into 10 to the power of minus 4. तो Yes, पूछा sir. क्या है? अल्फा ना. तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13/1000, sir. 13/1000. Gamma is equals to 3 times of your alpha. So alpha is equals to gamma divided by 3. यानी 3 into 10 to the power of minus 4 divided by 3. 3 चले गया. That will be equal 10 to power 10 minus power 4. minus 4. आ गया? Yes, sir. ये कैलकुलेशन आया कि नहीं आया? और करो मैं इसको. This one is right now for me. इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा. So 10 minus of this one 100 gamma is equals to 9.7 यानी 10. ये कितना हो गया? 0.03. तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 into 10 power minus 3 and we know the formula gamma is equals to 3 times of alpha. So alpha is equals to 10 to the power of minus 4. Done? चलिए करिए. ये वाला क्वेश्चन करिए बेटा. What force should be applied? What force should be applied to the ends of steel rod? To the ends of steel rod of a cross-sectional area 10 centimeters square to prevent it from elongation. To prevent it from your elongation when heated from 273 Kelvin to 303 Kelvin. Alpha of steel is 10 power minus 5 degrees Celsius inverse and Young's modulus is 2 into 10 to the power of 11 Newton per meter square. I'm giving the options. 2 into 10 to the power of 4 Newton, 3 into 10 to the power of 4 Newton, 6 into 10 to the power of 4 Newton and 12 into 10 to the power of 4 Newton. अभी मैंने फॉर्मूला बताया था. What force should be applied to the ends of the steel rod of a cross-sectional area 10 centimeter square? Area दे रखा है मेरे पास 10 centimeter square. To prevent it from the elongation and heated from. Initial temperature is given for me as 273 Kelvin. Final temperature is given as of your 303 Kelvin. Alpha of steel is equals to 10 to the power of minus 5 and Young's modulus is 2 into 10 to the power of 11. Is asking the force value is equals to how much? Force का formula क्या बेटा? F is equals to YA alpha into delta theta. So F is equals to 2 into 10 to the power of 11 by area is equals to 10 into centimeter is 10 to the power of minus 4 centimeter square है ना, because this one is 10 into 10 to the power of minus 2 का whole square is 10 to the power of minus 4 into alpha value is 10 to the power of minus 5 into temperature difference. Temperature difference कितना आ रहा है बेटा? 303 minus 273. 30. This will be your 30, isn't it? तो देखो कितना होगा? Sir, 6 into 10 power 4. आ गया सभी को? Yes, sir. Third option. Very good. So the answer is 6 into 10 to the power of 4 Newton.
An iron rod of length 50 centimeter is joined to an aluminium rod of length 100 centimeter. All measurements refer to 20 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion of iron and aluminium are 12 into 10 to the power of -6 per degree Celsius and 24 into 10 to the power of -6 per degree Celsius. First of all, the average linear expansion, very good question बेटा, बहुत जने फंस जाते हैं इसके अंदर. The average linear expansion coefficients of composite system is, options are 36 into 10 to the power of -6 per degree Celsius, 12 into 10 to the power of -6 per degree Celsius, 20 into 10 to the power of -6 per degree Celsius, and 48 into 10 to the power of -6 per degree Celsius. We got an iron rod of length how much? 50 centimeters, which has been joined to an aluminium rod of length of your 100 centimeters. यानी ये वाला एक rod है, and this is been attached to the another rod ऐसा. Listen. So this is made up of your iron, and this is made up of your aluminium. इसका initial length कितना है बेटा? 50 centimeters. और इसका जो length है L2 is equals to your 100 centimeters. और दोनों कितने टेम्परेचर पे रखा बेटा? 20 डिग्री सेल्सियस. और अल्फा ऑफ आयरन is given for me 12 into 10 power -6. Alpha of aluminium यानी alpha 2, that value is given as 24 into 10 to the power of -6. This is the given data for me. Isn't it? So अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, alpha equivalent will be equal to summation of your total lengths into your alpha divided by summation of the lengths. This is the formula beta, shortcut. Alpha equivalent will be equal to summation of your L into alpha divided by summation of your L. यानी alpha equivalent कितना बन गया बेटा? This will become how much for me? L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 divided by L1 plus L2. Clear? Am I clear with this one? Yes, sir. First one कितना है बेटा? L1. L1 is right now for me or 50. So third option. कितना आ रहा? Third option, sir. 20 into 10 power -6 आ रहा. Check. Yes. L1 कितना है बेटा? L1 is 50 into 10 to the power of -2 into alpha 1. Alpha 1 is how much for me? 12 into 10 to the power of -6 plus alpha 2. L2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 100 centimeters, and 100 into 10 to the power of -2 into this one is 24 into 10 to the power of -6 divided by L1 plus L2. L1 plus L2 मतलब this will be 50 plus of your 100 centimeters. That means this will be equal to 10 to the power of -2 और इसके लिए भी 10 to the power of -2. Third option, sir. So this will come out for me how much? 524. And this will be equal to 600 into 10 to the power of -6. मैं centimeters को common कर रहा हूँ basically. So भी जगह. Plus this will be equal to 2400 into 10 to the power of -6 divided by this will be equal to 150. तो ये कितना Sir. बन जाएगा?
2400 मतलब ये बन जाएगा 3000. 3000 divided by 150 into 10 to the power of minus 6 will be the common. So ये वाला चला गया. 15 ones are 15 twos are into 20. यानी this will be equal to 20 into 10 to the power of minus 6. आ गया? Yes, तो sir. सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करे तो भी चलता ना सर, ऊपर नीचे पड़े कन्वर्ट कर लिया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया. बेसिकली इसको नहीं छोड़ दिया मैंने, इसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया. तो डायरेक्टली 50 into 12 ले लिया, 600 into 10 power minus 6, 24 into 100, 2400 into 10 to the power of minus 6 divided by 150 total centimeters. ठीक है बेटा? सर वो सीरीज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं सर? हाँ, सीरीज वाला फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन 3-4 रॉड्स आगे तो जब मुश्किल हो जाती है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्टली. अगर 3 ले लेते, 4 ले लेते तो समेशन ऑफ डायरेक्टली सीधा सीधा बन जाता ना. L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 plus L3 alpha 3 divided by L1 plus L2 plus L3. यस सर. See this question. Figure shows the expansion of a 2-meter long metal rod. 2 meters long metal rod with temperature. With temperature. The volume expansion coefficient. Volume expansion coefficient of metal is. First option is 3 into 10 to the power of minus 4 Kelvin inverse. Second option is 1.5 into 10 to the power of minus 4 Kelvin inverse. Third option is 3 into 10 to the power of minus 5 Kelvin inverse. And fourth option is 1.5 into 10 to the power of minus 5 Kelvin inverse. Graph is given like this. This one is 5. This one is 10. This one is 15. This one is 20. This one is 25. ठीक है? और यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू, then यहाँ पर 1 वैल्यू, then वहाँ पर 1 वैल्यू. The value of this one is 0.5. This one is 1.0. This one is 1.5. This one is 2.0. This one is 2.5. Okay. Here this one is delta L and this one is taken in MF. On x-axis we are having temperature and that is taken in your Kelvin. This is the given graph. Question पढ़ो एक बार अच्छी तरह से. The figure shows the expansion of your 2-meter long metal rod with a temperature. यानी y-axis पे length है और x-axis पे temperature है. The volume expansion coefficient of metal is how much? आया किसी को? सेकंड ऑप्शन यूरेरिया. देखो एक्सपेंशन ऑफ रॉड का फॉर्मूला क्या है बेटा? डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा ना बेटा. देखो फ्रॉम द गिवन फिगर आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स. y की वैल्यू मतलब डेल्टा एल, x का वैल्यू मतलब डेल्टा थीटा है या डेल्टा टी.
isn't it? So यानी delta theta divided by delta L by delta theta will be equal to how much beta? L into alpha, isn't it? So from the given figure, if I take any part of the triangle beta, ऐसा, isn't it? This part of a triangle ले लो, या this part of a triangle ले लो, या this part of a triangle ले लो. So I can write that L into your alpha will be equal to your tan theta, isn't it? So from the given figure, tan theta value डालो बेटा, कौन सा भी value लेके डालो, they will be getting the answer for. So that will be equal to how much for me? 10 to the power of minus 3 divided by 10 by x. Done? इसके लिए ले रहा हूँ ये पार्ट के, Yes, sir. isn't it? तो अब देख लो कितना आ रहा है इसका. लेंथ कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 2 मीटर्स का दे रखा है. L Second is equals option. to 2 into alpha is equals to 10 to the power of minus 4, isn't it? तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फा वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/2 into 10 to the power of minus 4. 1/2 मतलब कितना हो जाएगा? 0.5. 0.5 into 10 to the power of minus 4, यानी that will be equal to your 5 into 10 to the power of minus 5 per Kelvin. 3 आ times गया? of gamma. Alpha is 3 times of gamma. हाँ, तो ये हो गया अल्फा. मेरे पास पूछा क्या प्रॉब्लम में? वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी गामा इज इक्वल्स टू 3 times of your alpha. So that is equals to 3 into alpha, 5 into 10 to the power of minus 5. 3 5s are 15, यानी 15 into 10 to the power of minus 5, that will be equal to 1.5 into 10 to the power of minus 4. आ गया? Yes, sir. See this question. A bimetallic strip having each strip of thickness 2 centimeter consists of zinc and silver, which is riveted together, stop. The approximate radius of curvature, of the strip when it is being heated through 50 degrees Celsius, will be alpha of zinc is given for me as 32 into 10 to the power of minus 6 per degree Celsius better, comma, and alpha of silver that is given as 19 into 10 to the power of minus 6 per degree Celsius. चलिए बताइए, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था इसका. bimetallic strip each having a strip thickness दे रखा है मेरे पास 2 centimeter, consists of your zinc and as well as of your silver which is riveted together, यानी दोनों को combine कर रखा हुआ है. The approximate radius of curvature का फॉर्मूला R is equals to thickness T divided by alpha 1 minus alpha 2 या alpha 2 minus of alpha 1. जो हायर होगा वो वैल्यू लेंगे ना अपन पहले. Alpha 2 minus alpha 1 into your temperature. That is alpha 2 minus alpha 1 into temperature difference delta theta. तो thickness कितना है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, यानी 2 into 10 to the power of minus 2 divided by किसका ज्यादा है बेटा? अल्फा ऑफ जिंक इज मोर, सो इट इज 32 minus 19, पावर कॉमन आ जाएगा, into 10 to the power of minus 6 into टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा प्रॉब्लम में? 50 डिग्री सेल्सियस. तो देख लीजिए कितना आ रहा है.
Sir, do we Okay. have to convert degree Celsius into Kelvin every time, or in degree Celsius only we have to keep the temperatures? Pico or Kelvin Pico, it will be one and same because number of divisions in the degree Celsius and Kelvin are same na beta. Okay, sir. Okay. Okay, sir. ओके ये देखो कितना आ रहा है जल्दी से बताइए 30.7. 30.7 30.7 meters क्योंकि आप लोग ने सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर लिया ना दैट विल बी गिविंग मी दैट आंसर डन हाँ चलो जल्दी से नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं बेटा एक छोटा सा कैलोरी मीटर छोटा सा कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला बेस्ड चलता है और थोड़ा बहुत ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं बेटा इसके अंदर सॉलिड्स और एक्सपेंशन में वही फॉर्मूलेस है उस पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे जब मॉक टेस्ट पेपर्स में आएंगे ना तो जब हम लोग विल डू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट लेकिन उतने फॉर्मूलेस तो अपने को बाय हार्ट लेके चलना है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स और ज्यादा है लेकिन अब वो ज्यादा करते बैठेंगे तो अपने को वर्कआउट नहीं होगा सो बट जितना अपने का जरूरत है उतना मैंने आप लोग को करवा दिया जब हम लोग मॉक टेस्ट करते रहेंगे ना ये पूरे फॉर्मूलेस अपने को वहां पर रिकलेक्ट होते चले जाएंगे क्लियर बेटा
Sir, these formulas are enough. Yeah, this formulas are more than enough in the initial stage. अब जैसे जैसे हम लोग मॉक टेस्ट करते रहेंगे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में, एक दो अगर एक्स्ट्रा आ गया तो मैं वहां का वहीं उस पेपर में मैं आपको बतलाते चले जाऊंगा. थोड़े स्टैंडर्ड रिलेशंस मैंने लिखा नहीं है, जैसे L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, एक दो तीन स्टैंडर्ड रिलेशंस है, वो अपने न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं, तो दैट टाइम विल ट्राई टू डिराइव द डेरिवेशंस इन द क्लास इटसेल्फ. First one देखिए, if I say that if only temperature of body changes, if only the temperature of the body changes when heat is supplied to it, then this heat is directly proportional to the mass of the body and this heat is directly proportional to your temperature difference. That means change in temperature. इन दोनों की जब मिला रहे तो विल बी गेटिंग वन फॉर्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू m into s into delta theta. S is right over me here a constant. S is known as what beta? Specific heat capacity. Specific heat capacity. Clear? So delta Q is equals to m into S into your delta theta. Clear? So what is the first formula in the calorimeter beta? Delta Q is equals to mass into specific heat into delta theta. S is known as what? A constant. That constant name is known as of your specific heat capacity. Clear? अब देखो बेटा, specific heat of water कितना होता है? Specific heat of water is 1 और unit will be equal to calorie per gram degree Celsius. ठीक है? The same way, specific heat of ice will be equal to half calorie per gram degree Celsius. Specific heat of steam और vapor वो भी कितना होता है? हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. That is also your half calorie per gram degree Celsius. Clear बेटा? 1 कैलोरी कितना होता है, याद है किसी को? 4.2 joule. कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जॉल्स. यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? 4.2 जॉल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस लिखूं, कोई गलत? सेम होगा ना? No, sir. So this will be 4.2. This one is also divided by 2 and unit will be equal to, ये हो जाएगा 2.1 जॉल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. क्लियर? ये भी उतना ही होगा, 2.1 जॉल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. क्लियर? Yes, sir. अगर मैं ग्राम्स को केजीस में कन्वर्ट कर दूं तो दिस विल बिकम फॉर मी हाउ मच बेटा? 4200 जॉल पर केजी डिग्री सेल्सियस. Isn't it? This value will become for me 2100 joule per kg degree Celsius. And this also will become for me the same 2100 joule per kg degree Celsius. Very important, but conversion बहुत ज़्यादा important है. 1 calorie is equals to 4.2 joules. And delta Q is equals to how much for me? Delta Q is equals to your ms into your delta theta. Delta Q is equals to your ms into your delta theta, where m is the mass, s is the specific heat of the capacity, and delta theta is your temperature difference.
डन बेटा, delta Q is equals to ms into your delta theta. 1 calorie is equals to 4.2 calories. 1 calorie is equals to 4.2 joules. ये 4.2 क्या होता है बेटा? 4.2 is your mechanical equivalent of heat. Mechanical equivalent of heat. Done? इस पे छोटा सा स्टार मार्क डाल के पॉइंट लिख लीजिए बेटा. If specific heat capacity is variable यानी कांस्टेंट ना होके अगर वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी स्पेसिफिक हीट इज द फंक्शन ऑफ योर टेम्परेचर. T क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर. T is your temperature. Then I can use the formula delta Q will be equal to integral of your m into s into your, this will become for me dt from the initial temperature T1 to the final temperature T2. आई बात क्लियर सभी को? अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ना होके अगर ये वेरिएबल होता विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, then we use the integration method. Delta Q will be equal to integral of your m into s into your delta theta. Clear? अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है then I'll be using the formula delta Q is equal to ms into delta T. अगर कांस्टेंट नहीं है तो then use the integration. Done? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट वाला. When state is changed, when state changes यानी solid से liquid, liquid से solid जब आप change कर रहे हो, when you are supplying the heat, मैंने मान के चलो हीट सप्लाई किया कोई बॉडी को, हीट इज सप्लाई. तो व्हेन यू आर सप्लाइंग द हीट, दिस इज बीन यूज्ड इन टू पार्ट्स बेटा. वन पार्ट इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग एंड अनदर इज यूज्ड फॉर योर बॉइलिंग, isn't it? When you are talking about melting, that means you are converting solid to liquid, यानी ice converting to liquid. Boiling मतलब क्या होगा? यहाँ पर liquid is being converting into gases, जैसा पानी उबालना. When you are changing from solid to liquid, use the formula delta Q is equals to m into L of your ice or L of your liquid, whatever it may be, fusion. ठीक है. और यहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू m इंटू एल ऑफ योर वेपर. बात क्लियर है? Am I clear with this one? Yes. Whenever there is a change in state, what is the heat energy का फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू m इंटू एल. व्हाट इज एल हियर बेटा? एल इज नोन एज ऑफ योर लेटेंट हीट ऑफ योर फ्यूजन. क्लियर बेटा? Yes, sir. What is L beta? L is known as of your latent heat of fusion or मान के चलो ice. Clear? This LV is nothing but your water. LV is your latent heat of vaporization. Latent heat of your vaporization. Clear? प्रॉब्लम में देखो क्या होता है. अगर अपने पास आइस है, मान के चलो आइस इज एट योर 0 डिग्री सेल्सियस, isn't it? And this is getting converted into water at 0 degree Celsius. So there is a change in state or not? And इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ योर आइस जो यूज हो रहा है अपने को, latent heat of your ice will be equal to 80 calorie per gram. Constant याद रख लीजिए बेटा, isn't it? या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या?
80 into 4.2 joule per gram. That means this will be equal to your 80 into your 4200 joule per kg. कोई problem किसी को इसके अंदर? No, sir. Is equals to m into L of ice कब लेंगे? When there is a change in state from ice solid state में रहेगा and it is been converting into the water यानी liquid state. उसी तरह से मान के चलो मेरे पास water है at 100 degree Celsius. If I am heating this water at 100 degree Celsius and if it is getting converted into steam, भाप में steam at your 100 degree Celsius. Steam at your 100 degree Celsius. तो यहाँ पर जो latent heat लगेगा, latent heat of the steam will be equal to 540 calorie per gram. Again, very important conversion, beta. 540 into 1 calorie is equals to 4.2 joule divided by gram. Gram को अगर मैं kgs में convert कर लो, so this will be equal to how much, beta, for me? So this value will come out for me over 540 into your 4200 joule per kg. यहाँ तक clear है सभी को? Am I clear with this one to everyone? Yes, sir. चलो अब यहाँ पर देखो बेटा. हाँ बेटा. जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसका लेटेंट हीट लेना या फिर जो कन्वर्ट हो रहा है? जो कन्वर्ट हो रहा है ना बेटा, लेटेंट हीट ऑफ योर स्टीम, यानी जिसमें कन्वर्ट हो गया वो उसका ले रहे हैं अपन. अब लेकिन फर्स्ट वाले में लेटेंट हीट ऑफ योर आइस लेंगे क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे रहेगा. एक्सेप्शन है बेटा. जब आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, विल बी टेकिंग द लेटेंट हीट ऑफ योर सॉलिड. जब आप लिक्विड से व्हाट यू कॉल वेपर पे जा रहे हो, जहां पर फाइनल कन्वर्ट हो रहा है ना, उसका लेटेंट हीट लेंगे. लेकिन लेटेंट हीट जो होगा ना, दैट इज ओनली फॉर स्टीम होगा और आइस होगा. लेटेंट हीट फॉर वाटर नहीं होगा. वाटर के लिए सिर्फ स्पेसिफिक हीट ही होता है. डन. चलिए नेक्स्ट स्लाइड बेटा. जर्नी ऑफ आइस. देखिए मेरे पास आइस है, मान के चलिए -10 डिग्री सेल्सियस. -10 degree Celsius of ice. This ice at -10 degree Celsius will convert into ice at 0 degree Celsius. Then ice at 0 degree Celsius will get converted into water at 0 degree Celsius. Then this water at 0 degree Celsius will convert into water at 100 degree Celsius. Then this water at 100 degree Celsius will finally convert into water at, steam at 100 degree Celsius. Am I clear with this journey? Yes, sir. This will convert into steam at 100 degree Celsius. But direct forward based questions होते हैं बेटा. तो पहले देख लीजिए फिर से एक बार, कहां से कहां तक हो रहा था. बेसिकली -10 डिग्री सेल्सियस इज बीन कन्वर्टिंग. तो क्या स्टेट चेंज हो रहा है क्या यहाँ पर? यहाँ पर देखो आइस जो है ना सॉलिड है और यहाँ पर भी सॉलिड ही है, बट टेम्परेचर डिफरेंस है. -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर जो एनर्जी यूज करेंगे अपन, Q1 इज इक्वल टू m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ योर आइस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा. क्लियर है? Yes, sir. Then यहाँ पर देखो solid is been converting into the liquid. I told you that whenever Latent heat of fusion. they will be using the relation Q2 is equals to m into latent heat of your ice. ठीक है? Then water is converting into water. तो ये भी liquid है, ये भी liquid है. There is no change in the state, but temperature difference है. When there is a temperature difference, use the formula m into specific heat of water into temperature difference. That is nothing but delta theta. अब यहाँ पर देखो liquid is been converting into vapor. Steam में convert हो रहा है. Then this will be Q4 will be equal to m into latent heat of vapor. क्या बात क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, sir. चलो मास नहीं दिया, मान के चलो कुछ ग्राम ले रहा हूं मैं. -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस
मान के चलो कुछ भी ग्राम दे रहा है, Q1 इज इक्वल्स टू जो भी दे रखा है m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है बेटा, हाफ इंटू टेम्परेचर डिफरेंस बेटा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी 0 माइनस माइनस ऑफ 10, यानी दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी m into your 1/2 into your 10. उसी तरह से Q2 will be equal to your m into latent heat of ice will be equal to 80. Then Q3 will be equal to your m specific heat of water is 1 into temperature difference will be equal to 100 minus 0, क्योंकि ये फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल टेम्परेचर है. Then Q4 देख लीजिए, Q4 will be equal to your m into latent heat of vapor, that will be equal to 540. So total amount of energy मतलब Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 डाल दो, that will give me the answer. हमें क्लियर? कोई डाउट किसी को इसके अंदर? हमें क्लियर बेटा? Yes, sir. जर्नी ऑफ आइस का जो इक्वेशन लिखते हैं ना, हमें क्लियर विद दिस वन. हम लोग इसको प्रॉब्लम्स में और ज्यादा डिटेल में करेंगे, लेकिन मेथड याद रख लीजिए, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो सिर्फ कैलोरीमीटर पढ़ाने के लिए अपने को 3-4 दिन लग जाते हैं. लेकिन जो नेक्टार है और जो बेसिक होता है ना, वो आप लोग एटलीस्ट याद रख लीजिए, कन्वर्जन याद रख लीजिए. अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप निकाल के कर सकते हैं बेसिकली. चलिए अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं विद वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी वेरिएबल स्पेसिफिक हीट. See this question, madam. See this one. Heat is supplied to some substance of mass m such that its temperature changes from T2 to T. ठीक है? Given specific heat capacity is S is equals to A plus B capital T. Calculate heat supply. चलो ट्राई करो एक बार. Heat is supplied to a substance of mass m such that its temperature is changing from T to T. तो मैंने क्या बोला था, अगर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल है, अगर स्पेसिफिक हीट इज ए फंक्शन ऑफ योर टेम्परेचर, या वाला स्पेसिफिक हीट इज ए वेरिएबल, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर m इंटू s इंटू डेल्टा t. बेसिक इंटीग्रेशन तो आता ही होगा सभी को. तो दिस वन इज योर डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू योर इंटीग्रल ऑफ योर m into specific heat, that is S, into temperature difference, that is nothing but T. Temperatures will be equal to from T1 to T2. तो values डाल दीजिए. Integral, this is your M. Initial temperature is T. Final temperature is 2T. इसकी वैल्यू प्रॉब्लम में दे रखा है A plus B into capital T. Capital T टेम्परेचर होता है यहाँ पर, into your DT. क्लियर? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रल ऑफ योर x to the power of your n into your dx. Integral of x to the power of n into your dx will be equal to your x n plus 1 divided by n plus 1. Clear? Done? तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. डेल्टा क्यूब विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ योर, दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी मच बेटा, m तो कांस्टेंट है, सो इट विल बी योर m into your, अगर मैं बाहर लिख रहा हूँ m को बेसिकली, सो दिस इज राइट नाउ फॉर मी योर m आउट, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ यहाँ पर. This is your integral of your A into your dt plus integral of your B into T into your dt. Limits are from T to 2T and this one is also T to 2T. ठीक है ना? This will be equal to your M.
दिस इज इंटीग्रल में ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ dt कितना होता है बेटा, इंटीग्रल ऑफ dt विल बी इक्वल टू योर t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2t माइनस t, यानी ये हो गया 2t माइनस t कर दो, दैट विल बी इक्वल टू योर t, यानी ये बन गया मुझे इंटीग्रल ऑफ योर dt विल बी इक्वल टू योर 2t माइनस t, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर t प्लस इसमें b आउट इंटीग्रल ऑफ योर t into your dt will be equal to, this will be equal to your t लिमिट विल बी इक्वल, यहाँ पर पावर कितना है बेटा, यहाँ पर 1, यानी 1 + 1 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू इज राइट नाउ +1, यानी दिस विल बी t² डिवाइडेड बाय 2, t² डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हो गया p/2 आउट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं अपर लिमिट ले रहा हूँ 2t एंड t में, यहाँ पर हो गया 1/2 आउट, अपर लिमिट इज नथिंग बट 2t का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट इज नथिंग बट t², यानी दैट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू अपर लिमिट इज 4t² माइनस t², यानी दैट विल बी इक्वल टू योर 3t²। आ गया, am I clear? So this will be equal to your m into your a into t plus this will be equal to 3bt² divided by 2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर समझ में आया बेटा सभी को? Yes, sir. अगर वेरिएबल है तो विल बी यूजिंग द इंटीग्रेशन। अब पूछो मत सर इतना बड़ा लेंथी कैलकुलेशन आता क्या बोल के, अगर आया तो इतना ज्यादा नहीं होगा, अब ये जो वैल्यू होगी ना शायद वो आपको बस सिंपल दे दे, मान के चलो Numerical. लाइक b into t दे दे, या मान के चलो सर 3 into t² दे दे, एक स्टेप में आपका इंटीग्रेशन होने वाला कंडीशन पे आ जाए आपका आंसर सीधा सीधा, ठीक है ना? अब इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, बात समझ में है ना? वाला क्वेश्चन, ये वाला मॉडल समझ में आया ना? आपको एग्जामिनेशन में हाल में आते रहेगा बेटा ऐसा वाला, इसलिए मैं आपको एक मॉडल बता दिया यहाँ पर, सो दैट दिस इज द बेसिक मेथड, वी नीड टू यूज द बेसिक इंटीग्रेशन टू डू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वन। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, कैलोरीमीटर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर बेटा? बहुत फेमस है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, Heat gained by loss hot Heat body loss, is equal to heat yeah. gain. Heat gain by any object at high temperature must be equal to your heat taken by the body at your low temperature, isn't it? So I can say that here heat given by object at high temperature will be equal to heat taken by object at what temperature beta? At low temperature. Your heat lost by hot body will be equal to heat gained by cold body. In a simple language, I can say that heat lost by hot body must be equal to heat gained by cold body. Heat gained by cold body. Clear? Heat given by an object at your high temperature must be equal to heat taken by the object at your cold temperature. Or else in a simple language, heat lost by your hot body will be equal to heat gained by your cold body. Sir, हाँ बेटा,
Sir, मतलब specific heat capacity and thermal capacity is different, no, sir? Both of them are different, better. That will come in the further. Water equivalent is also different. Heat capacity matlab mass into specific heat, MS. Unit degrees, no, sir, for unit mass. Your heat capacity. फर्दर में आएगा बेटा वो. पूरे पैर में मुझे ना काट दी, मेरा पैर खुदा रहे. See this question better based on this one. A liquid of mass m and specific heat capital C is heated to a temperature capital T. Done. Another liquid of mass m by 2 and specific heat 2C is heated to a temperature of 2T. Okay? If these two liquids are mixed, the resulting temperature of mixture is, चलो बताइए कितना होगा. First one is 2 by 3 times of T. Second option is 8 by 5 times of T. Third option is 3 by 5 times of T. And fourth option is 3 by 2 times of your T. Liquid of mass m and specific heat C is heated to a temperature T. Another liquid of mass m by 2 and specific heat 2C is heated to a temperature of your 2T. If these two liquids are being mixed, the resulting temperature of the mixture will be equal to how much? This is the liquid 1 and this is the liquid 2. Liquid 1 का mass कितना है बेटा m, specific heat कितना है C, temperature कितना है T. लिक्विड 2 का मास कितना है बेटा m by 2, स्पेसिफिक हीट कितना है 2C, टेम्परेचर इज 2T. सो T इक्विवेलेंट जो बनेगा देखो बेटा, T इक्विवेलेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू समेशन ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Equivalent temperature will always be equal to summation of your ms into delta T divided by m into your S. यानी T इक्विवेलेंट कितना बन गया बताइए? T equivalent equal to your, this will be your M1 C1 T1 plus of your M2 C2 T2 divided by, this one is right now M1 C1 plus M2 C2, क्योंकि S इसने C के दे रखा है बेटा. तो M की वैल्यू हो गई मेरे पास कैपिटल M, C की वैल्यू हो गई C, टेम्परेचर इज राइट नाउ फॉर मी T, plus this one is right now m by 2, specific heat is 2C, temperature is 2T divided by, this one is your m into C plus m by 2 into 2C. आ गया.
Sir, fourth option. Sir, 3D/2. वेरी गुड। मेथड समझ में आया ना? इक्विवेलेंट निकालने का तरीका सर वो M1 S1 T1 याद रखने के बजाय समीशन याद रख लो, आपको आराम से निकल जाता है बेसिकली। ठीक है, ये A2 चले गया यहाँ पर बेसिकली, सो दिस विल बी इक्वल टू योर MCT प्लस दिस विल से 2 MCT divided by your, ये बना कितना, A2 will be gets cancelled, that is nothing but 2 times of your MC. So this will be equal to how much for me? 3 MCT divided by 2 into your MC. MC will get cancelled, so it is 3 by 2 times of your T. So the answer is for me 4. Sir, heat lost by body equals to heat gain भी कर सकते हैं। हाँ वैसे ही कर रहा हूँ बेसिकली, आपको लेंथी हो जाएगा, आपको टाइम कंज्यूम करने के लिए अपने को फॉर्मूला बता रहा हूँ बेसिकली। सो T इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ योर M into S into T डिवाइडेड बाय M1 S1, यानी इनडायरेक्टली अपन T इक्विवेलेंट क्या लिख रहे हैं अपन, M1 S1 T1 plus of your M2 S2 T2 divided by M1 plus S1 plus M2 into S2, यही लिख रहे हैं ना? Yes, sir. Heat lost by the one body will be equal to heat gained by your another body. Clear? Yes, sir. Okay. So next question, this is something very important model. I hope you might have been done this one so many times, but still try to do it once again better. Regularly पूछा जाना वाला मॉडल है। Equal masses of 3 liquids A, B and C. A, B and C have temperatures 10 degrees Celsius, 25 degrees Celsius and 40 degrees Celsius respectively. If A and B are mixed, if A and B are mixed, the mixture has a temperature of 15 degrees Celsius. Be careful. First off, if B and C are mixed, the mixture has a temperature of 30 degrees Celsius. First off, if A and C, if A and C are mixed, the mixture will have a temperature of dash. क्लास में आपने बहुत बार करा होगा, लेकिन अभी अगर एग्जामिनेशन में आया तो करने का मेथड भी होना चाहिए. विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में. दिस आर द गिवन ऑप्शंस फॉर मी बेटा. तो जल्दी एक बार ट्राई कर लो, क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से. इक्वल मासेस ऑफ 3 लिक्विड्स, यानी तीनों के भी मासेस सेम है बेटा. So, ये लिक्विड है मेरे पास, बी लिक्विड है और सी लिक्विड है. तीनों के मासेस कितने हैं बेटा मेरे पास? सेम है. द मास ऑफ दिस वन इज m, द मास ऑफ दिस वन इज m. मास ऑफ दिस वन इज m एंड इसका भी मास हो गया m. स्पेसिफिक हीट्स कितने हैं बेटा? स्पेसिफिक हीट्स मुझे नहीं मालूम. आई एम टेकिंग S1, आई एम टेकिंग S2, आई एम टेकिंग S3. और टेम्परेचर्स कितने हैं इसके? एक तो 10 डिग्री सेल्सियस है और एक का 25 डिग्री सेल्सियस है और एक का 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना? अब प्रॉब्लम में क्या बोला? व्हेन A and B are mixed, व्हेन A and B are mixed, इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा? 15 डिग्री सेल्सियस, isn't it? When B and C are mixed, its temperature is given for me 30 degrees Celsius. Now my question is, when A and C are mixed, इसका टेम्परेचर कितना होगा? ये तो निकालना है ना अपने. हमें क्लियर? Yes, sir. फोर्थ ऑप्शन जुवेरिया. आया सभी को? फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए एक बार.
heat lost by one body will be equal to heat gained by another body. रेगुलर मॉडल है बेटा. फर्स्ट वन के लिए ले रहा हूं बेटा, ए एंड बी के लिए देखो समझा रहा हूं इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है. Heat lost by one body will be equal to your heat gained by another body. यानी टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास 15 T equivalent, that is equals to your 10 into your M into your S1 plus another one is right now 25 M into your S2 divided by this will be equal to your M into S1 plus of your M into S2. So everywhere mass will get cancelled इसके अंदर, isn't it? तो ये इधर चले जाएगा, तो this one is 15 times of S1 plus 15 times of S2 will be equal to 10 times of S1 plus 25 times of S2. तो all the S1 terms एक जगह ले लीजिए, S2 terms एक जगह ले लीजिए. So this will become for me 5 times of S1 is equals to 10 times of S2. यानी this will become for me how much बेटा? S1 value will be equal to 2 times of S2. आ गया? Am I clear? When B and C are mixed बेटा, तो उसका टेम्परेचर कितना है 30. 30 is equals to 25 into M into S2 plus इसका टेम्परेचर is 40 into your M into your S3 divided by this will be equal to your M into S2 plus M into your S3. Again M everywhere will get cancelled in this one, isn't it? So this will become for me 30 times of S2 plus 30 times of your S3 is equals to 25 S2 plus 40 times of your S3. All the S2 terms एक जगह, S3 terms are एक जगह. यानी this value will become how much for me? 5 times of S2 is equals to 10 times of S3. यानी S2 will be equal to 2 times of your S3. आ गया? अब फाइनली क्या हो रहा है? A and C are mixed. When A and C are mixed, T equivalent will be equal to 10 into M into your S1 plus of your 40 into M into your S3 divided by M into your S1 plus M into your S3. So everywhere mass will get cancelled क्योंकि ये तो same है. So it is 10 times of your S1. S1 कितना है बेटा? 2 times of your S2 plus 40 into your S3. आ गया? S3 मतलब कितना हो जाएगा? S2 divided by 2 divided by S1 plus S2. S1 is 2 times of S2 plus S3 will be equal to your S2 divided by 2. देख लीजिए कितना आ रहा है. इतना कैलकुलेशन तो कर सकते हैं आप लोग. कितना आ रहा है बेटा? 16 sir. 16. Very good. I hope everyone got an idea. 3 liquids का कंपलसरी एक तो बार प्रैक्टिस करना बेटा, इससे दूसरा अल्टरनेट नहीं है. दैट यू विल बी डूइंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस वन. और इसमें ग्राफ के भी क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े बहुत. सो मेक श्योर दैट विल ट्राई टू डू इवन दैट ग्राफिकल क्वेश्चंस फॉर दिस वन. डन बेटा. 820 में जाएगा. So this will be equal to 10 into 2. This will be equal to your how much per 820 है ना? 20 हो जाएगा. So this is your 40 times of your S2 divided by this will be equal to your 5 S2 divided by your 2. S2 will get cancelled. So this will be equal to 40 into 2 divided by 5. Done. That will be equal to 16 degrees Celsius. So ये थोड़ा बहुत कैलोरीमेट्री का पार्ट हो चुका है बेटा. The remaining part will try to do it in the tomorrow session of your class. ठीक है? Then even we'll start with the KTG and thermodynamics tomorrow itself बेटा. Heat transfer वगैरह भी करेंगे. थोड़ा फास्टली जाएंगे. Thermal expansion के कल भी प्रॉब्लम्स कल की क्लास में हम लोग कर लेंगे. ठीक है?
एक बार देख लेते हैं कल के पेपर में, फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट पेपर मैंने आप लोग को जो दिया था, क्या उसके अंदर हीट ट्रांसफर के या मे बी थर्मल एक्सपेंशन का कोई क्वेश्चन अपन कर सकते हैं क्या, देख लीजिए एक बार जल्दी से, 2 मिनट का टाइम। लेट मी चेक द क्वेश्चन। ये नहीं होगा, हीट का कहीं लिखा था ना मैंने, थर्मल एक्सपेंशन, हाँ ये वाला था, सर्वे ऑफ द स्टील का था, ये तो आप कर सकते थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का देखो बेटा, आंसर कोई बता सकता है? A hot copper pot of mass 2 kg is at a temperature of 150 degrees Celsius. You can pour 100 grams of water at 25 degrees Celsius into the pot. If only heat interaction is between the pot and water, and final temperature of the water will be equal to how much? Given specific heat of the copper is 390 and specific heat of water is 4200. Can anyone try it? क्या बेटा? Anyone? आ गया बेटा? 14 पर a hot copper pot of mass 2 kg is at a temperature of 150 and you pour 100 grams of water at 25 degrees Celsius into the pot. If only heat interaction is between the pot and water, then final temperature of the water will be equal to your how much? Your answer must be always between 0 to 100 beta. Second option. Very good. टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है बेटा? मैंने अभी आप लोगों को बताया था, कॉमन टेम्परेचर का जब आप फॉर्मूला लोगे, T is equals to M1S1 T1. हाँ, तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, T is equals to M1 S1 T1 plus of your M2 S2 T2 divided by your M1 S1 plus of your M2 S2. M1 मतलब कॉपर के लिए बेटा, कॉपर के लिए स्पेसिफिक हीट दे रखा है प्रॉब्लम में, इट इज 390 जॉल केजी पर केल्विन। मास कितना है बेटा? 0.1 kg and 2 kg. You pour 100 grams of water, ये 100 grams है, ये kg से बेटा, so make sure that you convert that one into given condition, isn't it? यानी M1 if I am taking for the copper, so for the copper if I write the relations, so what will be the answer beta? This will be equal to 2 into your 390 into your 150 plus M2 मतलब 100 grams, 100 grams मतलब 0.1, so this will be equal to 0.1 into specific heat of that one is 4200 into this will be equal to 25 divided by दोनों को ऐड कर लीजिए, so that will be equal to your how much will be 2.0 into your specific heat of that one is how much will be 390 plus 0.1 into 4200, isn't it? So इसको ऐड कर लीजिए, you'll get the answer for this. अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 100 डिग्री हो गया, so your answer must be always between 0 to 100 degrees Celsius बेटा,
more than 100 डिग्री सेल्सियस इज नॉट पॉसिबल, लेसर देन 100 डिग्री सेल्सियस इज नॉट पॉसिबल। अगर मान के चलो आपका आंसर -4 डिग्री सेल्सियस आया तो यू विल कीप द आंसर एज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका आंसर 120 डिग्री सेल्सियस आ गया 100 के ऊपर, दैट मींस यू विल कीप द आंसर एज 100 डिग्री सेल्सियस। इसको कैलकुलेट करने से अपने को कितना आ रहा है, वी आर गेटिंग 106.25 which is greater than 100 डिग्री सेल्सियस। सो नियर बाय आंसर हम लोग क्या टिक करके आएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। डन। Yes, sir. चलो, तो कल के क्लास में हम लोग कैलोरीमीटर कर लेंगे। बुशरा 106 आंसर है बेटा, बट योर आंसर विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 to 100, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको आंसर क्या टिक करके आना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, बट नॉट 106। ठीक है, चलो ओके बेटा, टेक केयर, बाय। बहुत ज्यादा ही हो गया आज, बाय बेटा।